हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। सो डियर लर्नर्स, मु जानी पिला माने डेफिनेटली वेट करिथिबे जे एग्जाम रो गोटे दिन पूर्व जेमिति हमरो रैपिड फायर मोड रे हम एमसीक्यूज गुडी को प्रैक्टिस करी आसुथले, तो अकाउंटेंसी पेपर रो भी सेमिति रैपिड फायर मोड रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो एमसीक्यू गुडी को वीडियो केतेबेले आसीबो बोली पिला अपेक्षा करिथिबे। सो हियर आई एम विथ द वीडियो। सो आज आम कौन करवा पूरा रैपिड फायर मोड रे 2017 धरिकी जी हो पार 24 पर्यंत भी जदि हो पार सबुतिक एमसीक्यू जोड़ा प्रीवियस ईयर आसी से गुड़ी आम डिस्कसन करवा। काइंडली वीडियो को भल भाव में देखिए समस्ते। मुझे जानी वीडियो गुड़ी भल माने प्रीवियस वीडियो गुड़ी देखी बही टेस्ट पेपर सब एगुड़ाक कंप्लीट कर देते, बट भाविन फॉर द लास्ट टाइम तुम यहाँ प्रैक्टिस करुच तो सही मूड रे ही एगुड़िक देख हुए तो समस्त कम आसी जापे। शेष परीक्षा अच्छी बहुत भल भाव में शेष परीक्षाटी देवा एवं आमर जो 2025 एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन अच्छी कॉमर्स पिलांकर ताकू विदाय देवा। ओके, हुए तो या पर तुम्हें चैनल को आसी न पार कि मुझे तो तुम +2 वीडियो बनई न पारे, बुझीपारुच। तो यहाँ हूँ आज पाठ पढ़ेबार मोर लास्ट क्लास तुम सहित जदि ग्रेजुएशन कर से देखा। एनीवेज पिला आमर गोटे हिंदी चैनल अच्छी, लास्ट थर पर कहीदे आज गोटे दिन अच्छी देखा। काली अकाउंटेंसी परीक्षा अच्छी, आज तुम एमसीक्यू वीडियो आनी जदि पार आम कॉमर्स एप्टीट्यूड हिंदी चैनल गोटे अच्छी। शेष थर पर कहूँ सब्सक्राइब करदेव जदि ठीक लगे आगो वीडियो हिंदी में आसब। ओके, जदि चैनल किसी बेनिफिटेड होता है देन सब्सक्राइब कर, अदरवाइज स्किप। चलो आरंभ करवा 2017 डिस्कशन। प्रथम क्वेश्चन नंबर 1A, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ ए न्यू मशीनरी इज। जितेबाला भी गोटे नुआ आसेट फिक्स्ड आसेट किना जाए से जहाँ भी खर्च हुए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो कि एनी खर्च हो तार सेगुड़ी को पिले आमर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर आसे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो excess of income over expenditure. Authorized capital is the maximum amount of share capital up to which a company can issue. Very important question. An example of a liquid asset is, liquid asset होची most frequent liquid asset होची cash. Manufacturing account reveal जदियो तुम सिलेबस रे नहीं बट मन रखी था cost of goods manufactured. Bad debt is a loss आउ expense रे डाउट करिवनी पिले loss ही correct answer एठारे हेजिवो। Next, डोनेशंस रिसीव फॉर ए स्पेशल पर्पस। डोनेशन जदि स्पेशल पर्पस में रिसीव होची लाइबिलिटी, जनरल पर्पस में रिसीव हेले इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी बा बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हेजिवो इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेजिवो एक्सपेंस। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल टू द पब्लिक। डॉक्यूमेंट कहले गोटे मन रखिबो प्रॉस्पेक्टस। शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी गेट, कंपनी जो शेयर होल्डर कंपनी शेयर होल्डर्स मैंने कौन नहीं था पिले डिविडेंड नहीं था एंड मन रखिबो डिवेंचर्स होल्डर इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट होची रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, मन रख वेरी इंपोर्टेंट। द एसेट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज चार्ज, तुम बेलू आसो यहाँ फिक्स्ड एसेट उपर डेप्रिसिएशन लगी थाए। आक्रूड इंटरेस्ट गोटे कौन, आक्रूड इंटरेस्ट होची गोटे एसेट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देख प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होची तुमर रिवैल्यूएशन अकाउंट रो अन्य नाम। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट शोज प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 रे देख गुडविल गोटे को एसेट, गुडविल होची गोटे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। एनुअल रिपेयर टू मशीनरी, जेहेतु एनुअली रिपेयर करा जाउची सेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हबो। बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रू बैलेंस कैपिटल अकाउंट को जाए बैलेंस शीट रे। ओके, देन एठी आसिला गिव एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट, सेटा तुम दे परिबो। ओके, छाड़ एक मार्क एटा आसीगला। देन हाउ शुड द पार्टनर शेयर प्रॉफिट, एटा कौन हो पार वेस्टिंग एसेट तुम दे पार कॉल ऑयल वेल हो पार, कोल माइन्स हो पार, फॉरेस्ट हो पार, ऑयल वेल हो पार। देखिए एगुड़ाक पार्टनर्स मैंने जब पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट किसी मेंशन नहीं ताले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू व्हिच अकाउंट इज द प्रॉफिट लॉस ऑफ पार्टनरशिप ट्रांसफर व्हेन दे कीप द कैपिटल अकाउंट फिक्स, तो एटा करंट एसेट करंट अकाउंट। व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस होची करंट एसेट बा फिक्टिशियस भी लिखि पारिबो। चलो एतिक थिला। देन माइन इज ए लिक्विड एसेट, एटा भूल अछि। वेस्टिंग एसेट अब सब्सक्रिप्शन इज ए कैपिटल रिसीट, नो एटा होची रेवेन्यू रिसीट। ट्रेडिंग अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट, नो ग्रॉस प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ओके, तो 2017 मसीहा क्वेश्चन हमें ओवर कर देचे। लेट्स मूव टू द 2018 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो ये आउटस्टैंडिंग देखिए लाइबिलिटी करबनी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कही माने एटा गोटे एसेट हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पाई। नेक्स्ट, द करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर ऑलवेज शोज। करंट अकाउंट देखो आइदर डेबिट और क्रेडिट, आइदर डेबिट एटा एंड नथिबो और थिबो देखिबो आइदर डेबिट और क्रेडिट। मन रख फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट केवल तुम शो कर क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट बा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तुम आइदर डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट,
आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट शेयर फॉरफिट हो सारा पर फॉरफिचर अकाउंट रीइश्यू हो सारा पर फॉरफिचर अकाउंट जहाँ थी सब कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर हो ऑप्शन डी करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो व्हाट excess of income over expenditure बहुत important question depreciation is a charged on fixed asset under accounts from incomplete records the opening capital can be ascertained by preparing opening statement of affairs and closing statement of affairs when drawings are made evenly throughout the year interest is charged 6 months prepaid insurance is an prepaid insurance होची तमर गोटे कोन पिले asset आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट गोटे कौन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कोल माइन गोटे की एसेट वेस्टिंग एसेट शेयर होल्डर माने कौन नियंती डिविडेंड ट्रेडिंग अकाउंट कौन रिवील करे ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा कैश पोजीशन किए करे रिसीट पेमेंट अकाउंट फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होची गोटे लायबिलिटी कॉल्स इन एरियर होची पिले एसेट कॉल्स इन एडवांस होची लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड in the absence of any mention in the partnership deed the partners share profit and losses in the equal ratio sundry debtors is a current asset wages paid for erection of a new machinery is a capital expenditure okay what type of liability is bank overdraft current liability where is closing stock shown in the final accounts if given in the trial balance only on the asset side of the balance sheet what type of asset is trademark intangible fixed asset okay चलो बाकी सरीगला 2018 मसीहार भी क्वेश्चन ये कवर करदे लेट्स मूव टू 2019 डिवेंचर होल्डर्स गेट व्हाट इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस गोटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट माइन होची गोटे करंट वेस्टिंग एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनपीओ एटा मन रखिबो एसेट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर एटी पिले मन रखिबो रिसीट पेमेंट अकाउंट कहा बदल रे प्रिपेयर करा जाए कैश बुक बदल रे प्रिपेयर करा जाए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कहा बदल रे प्रिपेयर करा जाए प्रिपेयर्ड इन लिeu ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए दुटा मन रखिबो परीक्षा आसीबो एथिरु ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ ए मशीनरी capital expenditure the asset on which depreciation is charged fixed asset profit and loss appropriation account is prepared to know appropriation of profit एटी मन रखिबो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस इज अ लायबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स net profit document required for issue of share capital to the public by a public limited company is called prospectus when depreciation is charged under straight line method the amount of depreciation remains constant diminishing balance method कहथिले decreases year after year मन रहिबो okay name the additional account opened by the partners when they decided to follow fixed capital method so এটা ହେଇଯିବ partners current account how should the partners share profits when there is no mention in the partnership deed equally to which account is the balance of income and expenditure account is transferred capital fund account okay chalo next goodwill is an intangible fixed asset एथुरु क्वेश्चन डेफिनेटली आसीबो कॉल्स इन एडवांस होची गोटे लायबिलिटी installation charges of a new machinery is a capital expenditure okay copyright is an intangible fixed asset ba is a koichi hele fixed asset closing stock appearing in the trial balance is shown only in the asset side of the balance sheet the maximum amount up to which a company can issue share capital is called authorized capital or nominal capital or registered capital okay next 2020 को जिबा हमें 20 रो प्रथम क्वेश्चन प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स गेट देख शेयर होल्डर्स कही था प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर कही था इक्विटी शेयर होल्डर्स कही था शेयर होल्डर माने डिविडेंड नियंती डिवेंचर्स होल्डर माने इंटरेस्ट नियंती स्टोन कोर इज अ वेस्टिंग एसेट तो वेस्टिंग एसेट रु सियोर गोटे क्वेश्चन आसीबो प्रीपेड इंश्योरेंस गोटे एसेट एथरु भी सियोर क्वेश्चन आसीबो आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट सियोर क्वेश्चन आसीबो एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर सियोर क्वेश्चन आसीबो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट सियोर क्वेश्चन आसीबो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स व्हाट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 100% आसीबो डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंडक्टिंग ए हेल्थ कैंप एडी माने स्पेशल पर्पस कहिछि तो एटा इज लायबिलिटी 100% आसीबो एटा भी when depreciation is charged under diminishing balance method amount of depreciation decreases year after year एटी मन रखिबो स्ट्रेट लाइन मेथड रो अन्य नाम होछि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अन्य नाम होची रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्स व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रिवील्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नेट प्रॉफिट इज रिवील्ड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज रिवील्ड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स गेट व्हाट इंटरेस्ट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन लीव ऑफ एटा ही कहूतली कैश बुक बदल रे रिसीट पेमेंट प्रिपेयर करा जाए प्रॉफिट एंड लॉस बदल रे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करा जाए। बहुत इंपोर्टेंट ए वर्षर क्वेश्चन तुम पे आसीथिबो। क्वेश्चन नंबर 2 आई नेम द अकाउंट to which balance of income and expenditure account is transferred capital fund account which additional account is opened in additional to the capital account when the capitals are fixed एटा बहुत जरूरी क्वेश्चन एटा इज current account which ratio is calculated when a partner retires partner retire करू डेथ करू किंबा कौन हो जाऊ सेटा तुम परमानेंट डिजेबल हो जाऊ कि छाड़ी की पड़ू व्हाट एवर रिटायर लीव कर जाऊ से गेनिंग रेशियो कंप्यूट करा जाए एडमिशन समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो मन रही वेरी गुड। सी करेक्ट द अंडरलाइन पोर्शन एटा होची माइन ही जीवो माइन इज अ वेस्टिंग एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गोटे एसेट ओके एटा हो जीवो एक्सपेंस कर दबनी इनकम अछि बोली एक्सपेंस कर दबनी इट इज एन एसेट फॉर एनपीओ फॉर एन एनपीओ। एनुअल रिपेयर टू एन एक्जिस्टिंग बिल्डिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जेहेतु एनुअल रिपेयर कहिछि। कॉल सिनेरियो गोटे कोन करेंट लायबिलिटी सॉरी करेंट एसेट। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज कैपिटल अकाउंट सब कौन शो कर क्रेडिट बैलेंस। additional expenditure on extension of an existing building is a what capital expenditure okay। चलो नेक्स्ट आम मूव करवा 2021 क्वेश्चन को 40टा क्वेश्चन अच्छी पिले रैपिड फायर मोड करवा सो प्लीज वेट कर। बैलेंस शीट गोटे कौन स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द प्रिपेरेशन ऑफ अ फाइनल अकाउंट रिटर्न आउटवर्ड बा सेल्स रिटर्न सॉरी रिटर्न आउटवर्ड्स मीन्स परचेज रिटर्न कौन करा जाए इट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज ओके। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन होची गोटे कौन एक्सपेंस। नेक्स्ट इफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट्स आर 60,000 85,000 रेस्पेक्टिवली देन द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट सो 85,000 माइनस 60,000 दैट इज 25,000। डेप्रिसिएशन ऑन फंक्शंस इज शोन अच्छा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जोड़ी भी अच्छी क्लिक करो। If partnership deed is silent, the profit sharing ratio between three partners equal. That means 1:1:1. The one which is not shown in partners प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कोटा शो करा जाए ना इंटरेस्ट ऑन लोन से लोन अकाउंट गोटे अलग थाए बाकी 3टा शो हुए। द मैक्सिमम ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन इशू इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल व्हेन शेयर्स आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू इट इज नोन एज शेयर्स इशूड एट पार। फेस वैल्यू सहित इशू कले पार फेस वैल्यू अधिका थिले प्रीमियम फेस वैल्यू कम थिले डिस्काउंट ओके। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ अ फोरफिटेड शेयर आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस रिसीव कर दीचो सेटा लायबिलिटी हो। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर एटा गोटे एक्सपेंस हो ओके। क्यारेज ऑन परचेज तुम ये कौन हम देख परचेज समय क्यारेज दौच तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड शो कर द वन व्हिच इज नॉट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट कोटा ट्रेडिंग अकाउंट शो हुए नी क्यारेज आउटवर्ड जोटा कि आमर शो कर प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड रे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पार्टनर्स लोन बहुत इंपोर्टेंट 6% मन रख। पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस अच्छी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल इंटरेस्ट ऑन लोन 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिज्वनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निजी सैलरी फैलरी किसी दिज्व ना कमिशन किसी दिज्व ना। एक्ट 1932 कोटा को डिफाइन करुच्ची क्या सहित रिलेटेड पार्टनरशिप सहित मन रख ये कंपनी एक्ट हूँ 2013 कोऑपरेटिव एक्ट हूँ 1912 सोल ट्रेड कौन एक्ट ना। चलो गुडविल हूँ गोटे कौन इंटेंजिबल एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस गोटे एसेट आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट सो ये कौटा आसीज पर्सनल अकाउंट आसीज। एसेट सब कौन शो करे डेबिट बैलेंस शो करे। 20टा क्वेश्चन सरीगला। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को जावा बैलेंस शीट रिवील्स बैलेंस शीट कौन रिवील करे पिले फाइनेंशियल पोजीशन इन केस ऑफ सोल ट्रेडर नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट कोटी को जाए पिले कैपिटल अकाउंट को जाए ओके। When shares are forfeited the amount already received is credited to जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो जाइए ताकू आम कौन करें शेयर फोरफिचर अकाउंट को क्रेडिट करें ओके। एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसेट कैश गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर इज ड्रॉइंग ओके माने बुझीजिव एटा पर्सनल पर्पस द वन व्हिच इज ए लायबिलिटी कोटा या भीतर लायबिलिटी पिले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाकी 3टा होची एसेट तुम प्रीपेड आक्रूड होची करंट एसेट मेशिनरी होची फिक्स्ड एसेट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड किए प्रिपेयर करे ना सोल ट्रेडर।
रिटर्न इनवर्ड मीन्स होची सेल्स रिटर्न पिले रिटर्न आउटवर्ड्स मीन्स परचेज रिटर्न डेप्रिसिएशन 5% पर आनम ऑन एन एसेट कॉस्टिंग 7 लाख ओके ठीक अच्छे 7 लाख 5% 7 पंचा 35,000 प्रथम वर्ष 35,000 आसो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड माने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट से कहूँ सोटा गोटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो मेसिनरी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड कही रिसीव्ड है आक्रूड इनकम हो ओके चलो मेसिनरी इज गोटे फिक्स्ड एसेट हो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अराइज फ्रॉम केतेबेले अराइज हुए जेतेबेले एसेट बढ़ी चले बा लाइबिलिटी कमे सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट जेतेबेले बढ़े सेतेबेले ही तुम प्रॉफिट हुए बट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी द वन व्हिच इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट द मेथड सुपर प्रॉफिट द मेथड कैपिटलाइज द मेथड तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट गोटे मेथड नुहे सोल ट्रेड बिजनेस कंसिस्ट्स वन ओनर बा वन पर्सन एज ओनर if opening stock and purchase including opening stock purchase including purchase cost and sales respectively 1 lakh 2 lakh and 3 lakh 50,000 ताने opening stock होची लक्षे purchase होची 2 लाख 3 लाख 50,000 होची सेल and the gross profit केते हबो तो सिंपल कथा ये तुम किसी बुद्धि खर्च करे ट्रेडिंग अकाउंट ड्र कल ओपनिंग स्टॉक एपटे डेबिट साइड लिखा हुए लक्षे परचेज भी डेबिट साइड लिखा हुए 2 लाख सेल्स तुम क्रेडिट साइड लिख 3 लाख 50,000 तो क्लोज कले एपटे 3 लाख 50,000 एटी भी 3 लाख 50,000 3 लाख 50,000 रु 3 लाख एपटे एपटे के लक्षे 2 लाख था तो 3 लाख गले तुम आसीज 50,000 ना से भी फर्मूला अच्छी तुम सेल्स इज इक्वल टू जो था जो ओपनिंग स्टॉक प्लस ये जो फर्मूला अच्छी तुम जानी छाड़ से यूज करा दरकार नहीं ट्रेडिंग अकाउंट ड्र कर हो कम तुम 50,000 इज करेक्ट रिपेयर टू एन ओल्ड मेसिनरी नाउ परचेज गोटे ओल्ड मेसिनरी था एबे तुम किणिल ताऊपर खर्च करुच तुम गोटे भल खर्चटे तुम कर सो यहाँ गोटे कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बैंक ओवरड्राफ्ट होची पिला गोटे लाइबिलिटी मन रख दैट टू करेंट लाइबिलिटी द वन व्हिच इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट कही तो यहाँ मेसिनरी हो इंटेंजिबल एसेट नुह मेसिनरी होची तुम कौन गोटे होची फिक्स्ड एसेट अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर मीन्स माने कौन सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर लेस देन इश्यूड शेयर्स येस तुम जी शेयर इश्यू करू कम जदि सब्सक्राइब करूँ हूँ पिले तुम कौन अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर्स द वन व्हिच इज व्हिच डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल एम भर कौटा शेयर कैपिटल पार्ट नुहे सेटा हूँ पिले शेयर प्रीमियम मनी बिकज से आमर गोटे प्रीमियम अकाउंट सिक्यूरिटी प्रीमियम अकाउंट कर बाकी गुड़िक शेयर कैपिटल पार्ट तो ये सहित पिले 2021 क्वेश्चंस गुड़ी आम कवर अप करदे नेक्स्ट आम 2022 को जा स्पीड कहला बेले हुए तो गोटे खंडे कौटी मिस्टेक हो जाऊँ पिले काइंडली देखो तुम जब जापर कमेंट सेक्शन लिखिदियो बाकी पिला देखीदे मुझे बहुत रैपिड फायर मोड कहूँ वीडियो को स्पीड करनी मुझे स्पीड ही कहूँ ओके एवं आउ स्पीड कह तुम देख 22 क्वेश्चन को सारदेवा ये एंड करवा देन 23-24 सेपरेट गोटे वीडियो करदेवी ओके से बहुत गुड़े क्वेश्चन डिस्कस करवा नेक्स्ट सैलरी हूँ गोटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल सॉरी सैलरी हूँ गोटे कौन पर्सनल अकाउंट एक्सपेंसेस एटा सुनो फिक्टिशियस अकाउंट एक्चुअली हम बिकज फिक्टिशियस अकाउंट होची नॉमिनल अकाउंट अदर नेम बट सीएचएससी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहूँ तो तुम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मारी पार कि लॉजिक अनुसार देखले फिक्टिशियस करेंट अकाउंट हवा कथा आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट होची पिला गोटे लाइबिलिटी प्रीपेड इंश्योरेंस होची गोटे एसेट अकाउंट हिसाब से देखले रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट प्रीपेड रेंट अच्छा प्रीपेड इंश्योरेंस गला प्रीपेड रेंट होची गोटे कौन एसेट कैश होची गोटे लिक्विड एसेट ट्रेडमार्क होची गोटे इंटेंजिबल एसेट शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ऑथराइज कैपिटल माने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अप टू व्हिच ए कंपनी कैन इश्यू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ ए न्यू मशीनरी होची कैपिटल एक्सपेंडिचर बैडेड होची गोटे लॉस ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्स ग्रॉस प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन रिवील्ड बाय बैलेंस शीट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन समान हुए सो रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर कमिशन टू मैनेजर होची गोटे एक्सपेंस व्हेन एसेट्स आर रिवैल्यूड एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू एसेट वैल्यू बढ़िले एसेट डेबिट हो क्रेडिट हो रिवैल्यूएशन मन रख द करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर ऑलवेज शोज करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर ऑलवेज शोज आइदर डेबिट और क्रेडिट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट डोनेशन सॉरी द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज कॉल्ड prospectus balance sheet is prepared to know the financial position when drawings are made evenly throughout the years interest is charged on 6 months okay next 20 questions machinery होची गोटे रियल अकाउंट जेहेतु एटा गोटे फिक्स्ड एसेट आउटस्टैंडिंग सैलरी होची रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रेंट पेड इन एडवांस बा प्रीपेड रेंट होची गोटे एसेट सैलरी पेड इन एडवांस सेम एटा होची तमर कोन प्रीपेड है एटा भी गोटे हिजबो कोन एसेट सन्ड्री डेटर गोटे कौन सन्ड्री डेटर हूँ गोटे करेंट एसेट गुडविल हूँ गोटे इंटेंजिबल एसेट प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स टुवर्ड शेयर कैपिटल इज कॉल्ड पेड ऑफ शेयर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इनकम ऑन एडवर्टाइजिंग गुड्स एटा एक्चुअली हवा कथा नॉर्मली एक्सपेंडिचर होचिले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैड डेट रिकवर्ड इज एन बैड डेट रिकवर्ड कल बैड डेट होनी बैड डेट जोटा होता ताको रिकवर कर सेटा गेन हो रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवील्स व्हाट प्रॉफिट और लॉस ओके
नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप इज मेड थ्रू केमती केमती डिस्ट्रीब्यूट करा जाए पार्टनर्स मान भितर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स नेट प्रॉफिट और नेट लॉस द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लिकेबल टू ए माइन को मेथड अप्लाई करा जाए डेप्लीशन मेथड मन रख पिले माइन कही था वेस्टिंग एसेट कही था डेप्लीशन मेथड अप्लाई करा जाए अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन decreases every year. The minimum number of partners in a partnership firm is 20. Depreciation is a maximum कहला माने पिले सेटा तमे 50 कंसीडर करिवो ओके 2013 एक्ट अनुसार सेटा 50 आ बैंकिंग नॉन बैंकिंग कांसेप्ट नाही. Depreciation is a process of valuation of asset allocation of a cost not the valuation of asset, so allocation of cost is correct. The balance of share forfeiture account after reissue transfer to capital reserve, interest on drawing is an income, interest on capital is an expense. सरीगला तो ये सहित आम बहुत गुड़े क्वेश्चन डिस्कसन करदे पे अप टू 2017 टू 2022. नेक्स्ट वीडियो रे हम जदि राति 8टा कि 9टार मुझे अपलोड करी शोला पूर्व टे चेक करदेव से 2023 मसीहार रेगुलर क्वेश्चन 2023 मसीहार एक्स रेगुलर पिलांकर जहाँ क्वेश्चन आसाला तुम भी से रेलिवेंट रहा बिकज सब्जेक्ट सेम अच्छी देन 2024 क्वेश्चन तो पाखापाखि आम से भी मोर देन 100 क्वेश्चन डिस्कसन करवा. सो वेट फॉर दैट वीडियो. आज ये वीडियो को मुझे रखुच्छी देखा नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. यस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.